Assalamu alaikum students. Today we will discuss about library science for second year. We will talk about model paper, its structure, marking criteria, and we will also discuss past papers. It is available in Urdu and in English. So watch till end and let's get started. In library science, section A, total marks are 20. These are multiple choice questions. Let's go through the multiple choice questions. Who says every book its reader? S.R. Ranganathan. What is the information given on the call number? Class number plus author mark. Which year was the first edition of colon classification published? 1925 AD. What number has been allotted to the general class in DDC? 000. In DDC, the number 400 belongs to language. Where are the books kept in the library? In library shelves. What is meant by AV materials? Audio visual materials. Who benefit from shelf list? Library staff. How many forms of cataloging are there? 4. Who is the founder of DDC classification scheme? Melville Dewey. Call number is always pasted at spine of book. Which of the following Arabic number is used for notation in DDC? Pure notations. In section B, answer any 10 parts. The answer of each part should not exceed 3 to 5 lines. Total marks are 30 for section B. You just have to attempt 10 parts and answer should be between 3 to 5 lines. Let's go through the most important questions. What is meant by biographical sources? Question number 2 is, what do you know about collation? Number 3, what is abstract? Number 4, why is catalog prepared? Number 5, which two methods are used in filling of catalog cards? Number 6, what is meant by shelving shelf systems? Number 7, which are the tools or sources of book selection in libraries? Number 8, which are the geographical sources in reference books? Number 9, what is accession register? Number 10, what is library advisory committee? Number 11, describe 2 advantages of book display fair. Number 12, define bibliography. Number 13, what is the difference between bibliography and publisher's catalog? Number 14, what is circulation desk? In section C, total marks would be 18. Attempt any 2 questions. All questions carry equal marks. These are the most important topics you have to go through. Define cataloging and write different kinds of catalogs. Question number 4 is, discuss charging system and which system is useful for your college library. Question number 5 is, define book classification and describe briefly the main features of DDC. लाइब्रेरी साइंस में उर्दू में भी आपका यही पेपर है.
इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन हिस्सा दोम जो है वो मौजूद है। स्वानी माखिज से क्या मुराद है? मारूजी तफसील से क्या मुराद है? इख्तिसार किसे कहते हैं? कैटलॉग क्यों तैयार किया जाता है? कैटलॉग कार्डों की फाइल कारी में कौन से दो तरीके इस्तेमाल होते हैं? शेल्फ कारी से क्या मुराद है? कुतुब खानों में कुतुब का इंतखाब किन जराए से किया जाता है? हवाला जाती कुतुब में जुग्राफियाई माखूज कौन कौन से हैं? दाखिला रजिस्टर क्या होता है? लाइब्रेरी मशावरती कमेटी क्या है? कुतुब की नुमाइश किताबी मेला के दो फवायद बयान करें। किताबियात की तारीफ करें। किताबियात और पब्लिशर्स कैटलॉग में क्या फ़र्क है? अजराई में से क्या मुराद है? हिस्सा सोम में आपके पास कोई से दो सवाल हल कीजिए, तमाम सवालों के नंबर बराबर हैं। 18 नंबर का आपका ये सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैटलॉग की तारीफ करें और इसकी मुख्तलिफ अकसाम बयान करें। सवाल नंबर 4, निजा निज़ाम अज्जा कुतुब को बयान करें। आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए कौन सा निज़ाम मौजू है? सवाल नंबर 5 है, कुतुब की दर्जाबंदी से क्या मुराद है? नीज ड्यूई की इशारती तकसीम की खसूसियात मुख्तसरन बयान करें। पास्ट पेपर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइब्रेरी साइंस के पास्ट पेपर में भी फर्स्ट सेक्शन आपका 12 नंबर का ही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उर्दू और इंग्लिश दोनों में है। हम ऐसा करते हैं कि इंग्लिश में स्टडी कर लेते हैं। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेलविल ड्यूई? DDC. How many editions of DDC have been published till now? 23. UDC is an abbreviation of Universal Decimal Classification. When was the Sears list of subject heading published? In 1923 AD. Which form of catalog we can access at home? Online catalog. Who uses the shelf list? Library staff. When did the AACR first edition appear? 1967 AD. Which book are not issued from library? Reference books. How many how many kinds of classification are there? 4. Which word index is derived from Latin? Book or library classification is art of knowledge. What should be noted from library catalog if a reader wants to get a book from Almira? Call number. सेक्शन बी में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास्ट पेपर में, उनको गो थ्रू कर लेते हैं। Write any 3 benefits of accessing. Which sources are helpful for selection of library materials? How many kinds of classification are there? Write their names. What is call number? Write the names of famous charging system. Any 3. What is dummy system? In imprints area of a catalog card, which information is entered? What is an encyclopedia? Write names of any 2 encyclopedias. What is index? Write the kinds of index. And list any 3 objectives of exhibition of books. Differentiate between library catalog and bibliography. What is bibliography? Write names of any 2 national bibliographies. What is meant by subject headings? Write the names of any 3 subject headings. Which information is entered in accession register? What type of information a classifier or cataloger gets from title page of a book?
सेक्शन सी में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज कैटलॉग, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ए लाइब्रेरी कैटलॉग। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। Question number 4 is, what is charging system? Discuss in detail the qualities of a good charging system. Question number 5 is, what is meant by book selection? Write the principles of book selection in detail. उर्दू में भी यही सवाल आए हुए हैं आपके पास। दाखिला रजिस्टर में इंदराज के कोई से 3 फवायद बयान करें। दर्जाबंदी की तकसीम। लाइब्रेरी में मवाद के इंतखाब में कौन से ज़राए मददगार होते हैं। दर्जाबंदी की कितनी इकसाम है, इनके नाम लिखें। तलब नंबर किसे कहते हैं। मशहूर अज्जाए निज़ाम के नाम लिखें कोई से 3। डी सिस्टम क्या होता है। कैटलॉग कार्ड के इम्प्रिंट हिस्सा में कौन सी मालूमात दर्ज की जाती हैं। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है। किसी 2 इंसाइक्लोपीडिया के नाम लिखें। इशारिया किसे कहते हैं, इशारिया की इकसाम लिखें। किताबों की नुमाइश के कोई से 3 मकासद तहरीर करें। लाइब्रेरी कैटलॉग और किताबियात में क्या फ़र्क है। किताबियात क्या होती हैं। कोई सी 2 कौमी किताबियात के नाम लिखें। मौजूई सुर्खियों से क्या मुराद है। नीज़ कोई सी 3 मौजूई सुर्खियों के नाम लिखें। दाखिला रजिस्टर में कौन सी मालूमात दर्ज होती हैं। एक क्लासिफाइड या कैटलॉग, एक क्लासिफायर या कैटलॉगर किताब के उनवानी सफ़ा से किस किस्म की मालूमात हासिल करता है। हिस्सा 100 में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटलॉग क्या है, लाइब्रेरी की कैटलॉग की अहमियत बयान करें। सवाल नंबर 4, अजराई निज़ाम क्या है, एक अच्छे अजराई निज़ाम की खसूसियात खूबियाँ तफसीलन बयान करें। सवाल नंबर 5, इंतखाब कुतुब क्या है, इंतखाब कुतुब के उसूल बयान करें। एक और भी लाइब्रेरी साइंस का पास्ट पेपर इसमें ऐड है, उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। द वर्ड क्लासिफिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज, लैटिन। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इंडेक्स, 3. In DDC only dash symbols are used, Arabic. For all libraries, the first famous scheme is DDC. How many editions of Dewey's classification have been published so far? 23. The name of the world's first and oldest catalog is Pinks. The second name of card catalog is White Elephant. What is considered as the backbone of library collection? Bibliography. Withdrawal of book from library is called reading. The use of book limited to library is called reference book. Pakistan National Bibliography started in 1966. How many digits are introduced? How many digits are included in ISBN? 13. In section B of the past paper, these are the most important questions. Write down any 3 functions of library classification. What is the difference between subject index and author index? Write any 3 qualities of a good notation. What is meant by shelving? Write the meanings of Dewey classification. Mention any two qualities of DDC notation. Write any 3 features or advantages of seared list of subject heading. What is card catalog? What are famous shapes or forms of library catalog? Enlist any 3. Write any 3 advantages of online catalog. Opaque. What is shelf list? What is AACR? Which book are called reference books? What is meant by library material? What are textbooks? In section C, these are the most important questions. Write a detailed note on Melville Dewey decimal classification as a landmark in the history of library classification. Question number 4 is, what is circulation section? Write down its functions, responsibilities, and services in detail. Question number 5 is,
Write in detail role of library in society. اردو میں بھی یہی سوال ہیں آپ کے حصہ دوم میں اور حصہ سوم میں. اس میں سے کچھ کوشچن جو ہیں وہ گو تھرو کر لیتے ہیں ہم. لائبریری درجہ بندی کے کوئی سے 3 فرائض بیان کریں. موضوعی اشاریہ اور مصنف کے اشاریہ میں کیا فرق ہے؟ اچھی علامات کی کوئی سی 3 خوبیاں لکھیں. شیلف کاری سے کیا مراد ہے؟ ڈی وی کی درجہ بندی کا مفہوم بیان کریں. You can go through the rest of the questions. حصہ سوم میں جو آپ کے پاس پیپر میں کوشچن آئے ہوئے تھے، سوال نمبر 3 ہے میلول ڈیوی کی اشاریاتی درجہ بندی لائبریری درجہ بندی کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، تفصیل سے بیان کریں. سوال نمبر 4 اجرائی سیکشن یا اجرائی شعبہ سے کیا مراد ہے، اس کے فرائض، ذمہ داریاں اور خدمات بیان کریں. سوال نمبر 5 معاشرے میں کتب خانہ کے کردار پر تفصیل سے لکھیں. یہ آپ کا لائبریری سائنس کا ماڈل پیپر اور پاسٹ ایئرس کے 2 پیپر انکلوڈ کر دیے گئے ہیں اس میں. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی کوشچن ہو you can leave a comment below. Make sure you share this paper with your class fellows. Like, subscribe and share with other fellow beings. آرٹس کے طلبہ توجہ فرمائیں، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے. اب ہمارا خصوصی پلیٹ فارم لے کر آ گیا ہے آپ کے لیے مکمل حل. اسپیشل آفر صرف آپ کے لیے. اس پلیٹ فارم پر آپ کو ملے گا سلیبس کی مکمل معلومات، کورس کی تمام معیاری کتابیں، نئے پیٹرن کے مطابق تیاری، پریکٹس مٹیریل اور گائیڈنس. اب آرٹس کی تیاری ہوگی آسان، جدید اور مؤثر. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں نمبر پہ 0333-8722-868 یا 0346-155-0903. I will meet you in the next model paper. Till then, Allah Hafiz.